the son of Arjuna. I believe most of you, especially Indians, and whosoever has read Mahabharata, must have heard about him. He learned the art of breaking Chakravyuh, yes, the trap, while he was in his mother's womb, Subhadra. He imbibed the knowledge and applied it when required in his adulthood. Now, many of us would find it unimaginable and treat this story as fiction. But what if I tell you that it is possible to imbibe qualities in the child in the womb itself? And what if I tell you that today I'll introduce to a very distinguished and renowned guest who will take us on this journey and can help parents in doing it? After all, parents want the best for the child. And as parents, we do whatever is within our limits. And sometimes actually beyond too. I believe you will have precious nuggets to note down. So please bring in your pen and paper. Until then, I shall wait for you. Hello all, I'm Kapeel Gupta, founder of Study Abroad Academy. I'm on a mission to coach and mentor 100,000 high school students and help them realize their dream of studying in the best universities of the world and build happy careers for themselves. And so, as I was talking about my distinguished guest, his name is Mr. Makarand Bhatt. He's an international career and education advisor, blogger, writer, podcaster, and professional astrologer. He has overall 33 years of corporate experience in the field of business development, human resources, and training, as well as global career and education consulting. Until now, he has helped more than 1,800 students from India, US, UK to plan and manage their international careers and education. My first meeting with him was in the virtual world when I joined TASA Globe. I was mesmerized by his depth of knowledge. After this connection, I got to know more about him and his work. I came to know that he's currently working on a hypothesis called planned career, aimed at a community of knowledgeable and educated parents and enabling them to become successful parents. This community will be able to make informed decisions about their children's future and provide guidance on how to plan and manage their international careers and education. He hopes his hypothesis will empower parents to make better decisions and help them become successful in their own right. So, actually, I couldn't stop myself inviting him to my podcast. So, here he is to talk about his hypothesis, and who better can be if not him. So, over to Mr. Makarand Bhatt. Thank you very much, Kapilji, for giving so warm welcome on this session. And truly speaking, the subject which you opted is creating the goosebump, not only for me, but I'm sure it will be even for people who would be interested in the subject which is known as the Garbh Sanskar. Okay. हमने जैसे आपने बताया अभिमन्यु की कथा सबको पता है, राइट? ये कथा से हमें दो चीजें पता चलती है. पहली बात तो यह है कि अगर उस महाभारत के समय में अभिमन्यु पैदा हो सकता है तो आज के समय में भी अभिमन्यु पैदा हो सकता है. राइट. और दूसरी बात, आज के समय में भी अगर अभिमन्यु जैसा बच्चा अगर आपको पैदा करना है तो आपको सुभद्रा जैसी मां बनने की अपनी क्षमता होनी चाहिए, जो अक्सर होती है लेकिन उसको थोड़ा सा नजरअंदाज किया जाता है. तो गर्भ संस्कार जो है ना, ये कोई रिलीजियस एस्पेक्ट या रिलीजियस सब्जेक्ट नहीं है. नॉर्मली हम ये कहते हैं कि संस्कार शब्द जो है, ठीक है, गर्भ संस्कार, इसमें दो महत्वपूर्ण शब्द हैं.
Garbh means the womb. Okay. The Okay. term Garbha Sanskar is having two parts. One is a Garbh, which means a womb of a woman, and the Sanskar means. और यहीं पे आपको हमें ये बात समझनी चाहिए कि संस्कार here it's not in the context of religion or religious subject, okay, but it is in the context of education and refinement. Okay. ओके. गर्भ संस्कार का शब्द अगर सही सही शब्द मायने में अगर हम उसको डिकोड करें तो ये है कि व्हेन यू आर कंसीविंग अ बेबी व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन एंड रिफाइनमेंट इज नीडेड टू बी ऑब्जर्व बिफोर कंसीविंग चाइल्ड एंड आफ्टर कंसीविंग चाइल्ड. So that's what happened in case of Abhimanyu. एग्जैक्टली. ठीक है. तो इसके तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, या अगर हम इसको पर्सपेक्टिव कहें तो भी गलत नहीं होगा. देयर आर थ्री डिफरेंट पर्सपेक्टिव बिहाइंड दिस. फर्स्ट इज अ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. ओके. बायोलॉजिकल मीन्स इफ whenever a woman is ready to conceive a baby, what sort of biological or physical preparation is needed before you conceive a baby and after conceiving the baby. So that's the first is a biological, or you can say the physical preparedness. Okay. The second is psychological preparedness. Right? Psychological means जब आप एक फैमिली एक्सटेंड करने की बात जब हम करते हैं उस वक्त क्या हमें साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन हमने की है? अगर वो हमने नहीं की है तो चैलेंजेस डेफिनेटली रहेंगे. Right. तो किस तरह की साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है. राइट. तीसरी बात जो है दैट्स, और तीसरा पर्सपेक्टिव जो है इसके अंदर व्हिच इज नोन एज अ एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. ये एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मैं मानता हूं कभी कभी एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या एस्ट्रोलॉजी बाय इटसेल्फ इज अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, but please believe me, it's a science. And how effectively we can use the available science with us while we are extending our, extending our family. So, मेरा एक सीधा सवाल है कि when if you want to extend your family, okay, are you really ready for parenting? That's the first question which we have to answer. Have you done your physical and psychological grooming to be a parent? Because planning a baby involves various combinations of factors which include physical health, timing of conceiving baby, and your emotional readiness. Right. Agree. Right? ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन सही होता है, that is the right moment when you can think of extending your family. And that the time, that particular point of time, which is a right time for you to conceive a baby. तो ये चीजें समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. Sir, I'll just interrupt you in between. Yeah. You talked about astrology as a very controversial topic. But through my personal experience, I would say that yes, many of us, in fact, worldwide, it's not only in India, that astrology exists in different forms, right? Yeah. But yes, many people try to use astrology as a way to just get rid of their problems, and when they are not able to do it, they begin to have a disbelief, right? But I True. believe astrology is much more than that. True. See, when it comes to astrology as a subject, or you can say as a science, it is pure mathematics. ठीक है सर. एक बात सिंपल सी समझ लीजिए, हाल ही में कुछ 3-4 दिन पहले मून एक्लिप्स हुआ. ठीक है. नासा को
उसके लिए रिसर्च करना पड़ा। लेकिन हमारे पास जो एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी का जो साइंस है, उसमें होने वाले एक्लिप्स हम एक साल नहीं, हम अगले 100 साल के भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दैट्स अ प्योर कैलकुलेशन ऑफ द प्लानिटरी मूवमेंट्स। Right. Yes. हाँ, ये बात जरूरी है, जैसे कि आपने ये बताया कि देर आर चांसेस वेयर पीपल डू नॉट सी एनी बेनिफिट, okay, so they start or they stop believing the astrology as a science. उसके पीछे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि इफ यू डू नॉट हैव योर डेटा रिलेटेड टू योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस एंड ऑल, ओके, अगर उसमें कुछ मिसमैच है तो पूरे चांसेस है कि आपकी एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन गलत होगी। ओके, please understand, science can never go wrong. If I am not understanding that science in a right way, or if I do not know how to use the science for my own benefit, okay, then you cannot pass that blame on that science itself, that science is incorrect. Right. Right. Very true. And then coming from astrology back to our main topic of Garbh Sanskar, though you already answered my first question, because I would have asked you what is Garbh Sanskar, and you have already said that. But that comes to be because it's listening from you, it's supposed to be like very amazing concept. But so if the second question that comes to my mind is how it is done, can a normal person go about doing it? Yeah, why not? In fact, जैसे मैंने आपको बताया कि there are 3 parts involved into this गर्भ संस्कार। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये नहीं, मैं फिर से डिकोड करना चाहूंगा संस्कार शब्द को। संस्कार इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू एजुकेटिंग योर सेल्फ, ओके, दैट फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट आर यू रेडी? I'm sorry to say, but the crude, there is a crude reality is conceiving a baby is not just an output of your sexual relationship, but you can really plan that event to happen in your life. Okay, जब आप प्लान की बात करते हैं, ठीक है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं बिफोर दे कंसीविंग बेबी? What are they doing? Are they really having their own strategy in place? I'm sorry, मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट के शब्द भी यूज कर रहा हूं, पर हर चीज के पीछे मैं एक फॉर्म बिलीवर हूं, एक चीज मानता हूं कि why to struggle when you can plan? Right. Isn't it? जब आप प्लान कर सकते हो तो स्ट्रगल क्यों होनी चाहिए? राइट? अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि गर्भ संस्कार ये जो एक प्रोसेस है, there are 3 different perspectives. One is biological, or you can say the physical. Second is the psychological, and the third is your astrological. Okay, ये 3 पर्सपेक्टिव है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, they are just taking the singular advice from the medical consultant or a doctors, and that too when they already conceived the baby. Or people are taking medical advice in the situation where they are not able to conceive baby. There are certain certain challenges are there, or maybe some complications are there. Then only they are going and meeting the doctors and taking the advice. लेकिन वो सिंगुलर एडवाइस है, ठीक है। तो एक एक करके हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द राइट मेथड ऑफ डूइंग और यू कैन से कंसीविंग द बेबी, बायोलॉजिकल में व्हाट आर योर फूड हैबिट्स, व्हाट आर योर स्लीपिंग हैबिट्स, ठीक है, व्हाट इज योर फिजिकल कंडीशन, ठीक है। अक्सर मैं देखता हूं लोगों को कि आफ्टर कंसीविंग बेबी द वुमन इज स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी, और फिर इमीडिएटली मेडिकेशन शुरू हो जाता है।
So before you conceive the baby, are you physically fit? Have you, first of all, have you done your physical checkup? Number one. So that includes आपका हीमोग्लोबिन क्या है, बॉडी में सोडियम लेवल क्या है, कैल्शियम लेवल क्या है, वगैरह वगैरह, राइट. नंबर टू, व्हाट इज योर बॉडी वेट. नंबर थ्री is based on this, which type of supplements are needed for you to start as a medication before you conceive the baby. That includes vitamin supplements, okay, calcium supplements, okay. So the point is कि you will be able to deliver a healthy child only when you yourself is healthy. अगर आप कुछ खुद healthy अगर नहीं है, how will you be able to produce a healthy baby? Right. अब देखिए, जब हम हेल्दी बेबी की बात कर रहे हैं तो अपनी हेल्थ की जो बात हमको बात करनी पड़ेगी, ठीक है. तो हमारे द लेडी हु विल बी कंसीविंग द बेबी, ओके, शुड हैव द प्रॉपर चेकअप टू बी डन. They should have the proper plan to be taken from the dietitian if needed. Okay, जो जिसके आप एक प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हो ना, कि बिफोर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके फूड चार्ट क्या होना चाहिए, आपके फूड हैबिट्स क्या होने चाहिए, ठीक है. सी, जो गर्भ जिसको कहते हैं, वूम कहते हैं, ठीक है, इट्स अ नर्चरिंग, I would say a place where you are actually nurturing the new generation. It is not a baby which you are producing. Right. So अगर आपको एक हेल्दी जनरेशन ये करनी है तो वो कैसे होगी? बच्चे का भी साइकोलॉजिकल और फिजिकल डेवलपमेंट वूम में सही होना चाहिए, isn't it? उसका भी तो ठीक से होना चाहिए. तो अगर if mother is weak, if mother is anemic, okay, if mother is not able to consume proper food or a quality food, if mother doesn't have the proper, what do you say, the contents of various vitamins and supplements अगर नहीं लिया है तो बच्चे तक कैसे जाएगा? So whenever as a part of your Garbh Sanskar, get physically ready before you conceive the baby. That is the first part of it. The second part, that is called psychological grooming. अब मेरा एक सीधा सवाल है कि when you are extending families, okay, how many times you are actually having the very constructive and a directed discussion with your husband or a wife or family members within the family. When you are conceiving baby, before that you have to create that ecosystem, right ecosystem around you, जिसमें जब आप when you are actually conceiving baby, आपका भी डेवलपमेंट, आपका भी रख रखाव सही तरीके से होना चाहिए. और साथ में जब बच्चा आएगा तब बच्चे के लिए भी there has to be a welcoming environment in the family. Conceiving baby is a celebration for the family. Right. It is not an additional responsibility which is coming. Right. तो मैं तो एक समझता हूँ, मैं अक्सर खुद को भी मैं बिलीव करता हूँ कि हमारे यहाँ कई सारे सेलिब्रेशन हम करते हैं, जैसे दिवाली सेलिब्रेशन होता है, होली सेलिब्रेशन होता है, ठीक है, सावन का महीना आता है, उसमें हमारे कुछ सेलिब्रेशन, रिलीजियस सेलिब्रेशंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है. साथ साथ में हमारे घर में शादियां होती है, ठीक है, और कई सारे सोशल सेलिब्रेशन होते हैं. अब आप देखिए, कोई भी सेलिब्रेशन एक दिन से एक महीने से ज्यादा नहीं चलता है. सावन का महीना ले लो तो 30 दिन, शादी ले लो तो 1-2-3 दिन की होती है, राइट. तो कोई भी सेलिब्रेशन 2-3 दिन से 30 दिन से ऊपर नहीं होता है. But a coming new child in a family is a celebration full of 9 months.
That राइट actually extends after 9 months also. या उसके बाद तो और भी देयर इज अ सेकंड लेवल ऑफ सेलिब्रेशन स्टार्ट, Yes. राइट. तो जब साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग की जब हम बात करते हैं, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमको समझना चाहिए. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द मूड ऑफ अ वुमन इज मोर इम्पोर्टेंट. Yes. ठीक है, द मेंटल कंडीशन. ओके, द फर्स्ट पार्ट इज अ मेंटल कंडीशन. अब उस पर्टिकुलर वुमेन का या स्त्री का मेंटल कंडीशनिंग या मेंटल स्टेटस अच्छा रहे, उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है? इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटायर फैमिली. Right. So to keep that lady in a happy state of mind, right? Right. अब उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? You may have to change the atmosphere in the home. You may have the different style of talking. You may have different story to share. Okay, घर में संगीत होना चाहिए, घर में खुशी का माहौल होना चाहिए. So that lady should be in a right state of mind. राइट स्टेट ऑफ माइंड के भी दो तीन पर्सपेक्टिव है. फर्स्ट इज रिलीजियस पर्सपेक्टिव. ठीक है, हाँ, एथिस्ट लोगों के लिए ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. ठीक है, बट पीपल हु आर ऑलरेडी रिलीजियस माइंडेड, ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड दे आर एक्चुअली वर्शिपिंग मोर. दे एस्टैब्लिश दैट कनेक्ट, देयर कनेक्ट विद द गॉड. अब सोचिए, एक लेडी अपना एक कनेक्ट भगवान के साथ एस्टैब्लिश करती है, उस सुपर पावर में अपना कनेक्ट अपने आप को कनेक्ट करती है. अब सोचिए, उसके गर्भ में पल रहा बच्चा अभिमन्यु नहीं होगा तो कौन होगा? सो फर्स्ट इज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ साइकोलॉजिकल अपग्रेडेशन और नर्चरिंग, ठीक है, तो फर्स्ट इज अ रिलीजियस पार्ट. नंबर टू इज एन एंटरटेनमेंट. सो इन एंटरटेनमेंट यू मे प्ले music, you may chant the mantras, you can read good books. Okay, ये पढ़ना जरूरी. मैं तो मेरा एक सभी फैमिलीज से मेरा एक अनुरोध है कि इफ यू गेट योर woman or a lady conceived the baby in a family during those 9 months or 9.5 months, सबसे पहले घर का टीवी बंद कर दीजिए. Don't switch on your TV and don't watch those stupid serials and the news. But what if the woman herself loves them? I'm coming to that point only. See, अगर मैं फैमिली को रिफ्रेन करने की बात कर रहा हूँ, so lady is the first person who should keep herself away from this kind of negative influences. They should stop the newspaper also, right? आप कितना पॉजिटिव माइंडसेट को माइंडसेट बनाए रखने के लिए आप क्या करते हो? अगर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस पर्टिकुलर लेडी की खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि शी शुड बी ऑलवेज बीइंग इनटू द राइट स्टेट ऑफ माइंड. और ये जितना भी गार्बेज आता है ना, ठीक है, आइदर इट इज कमिंग फ्रॉम द टेलीविजन और न्यूज़पेपर और मे बी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, दे शुड रिफ्रेन themselves from that particular this thing. Okay, तो ये दूसरा है. द तीसरी बात होती है साइकोलॉजिकल में, वो है पॉजिटिव रीअफर्मेशन. क्योंकि हम कहते हैं वट एवर द माइंड ऑफ अ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट विल अचीव. तो व्हाट आर यू कंसीविंग? इफ यू आर कंसीविंग द रॉन्ग थिंग्स, बिलीव मी, यू आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस अ अभिमन्यु. Yes, exactly. Right? Because during those 9 months, or rather I would put it this way, during those 36 to 38 weeks or 40 weeks whatsoever, the baby in a womb thinks the way his or her mother thinks. Okay. Right? So it is आप जो भी आप रिसीव कर रहे हो ना इस दुनिया में, ठीक है, उस समय में, वो आप अपने तक सीमित नहीं रख रहे हो. आप उसको आपके गर्भ में पल रहा जो जीव है ना, उसको भी एक्सटेंड करते हो. राइट? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डबल हो जाती है कि आपको अपने आप को भी बचाए रखना है और नेगेटिव इन्फ्लुएंस से और बच्चे को भी. तो ये हुआ साइकोलॉजिकल. द तीसरा पार्ट जो है दैट इज द एस्ट्रोलॉजिकल.
एस्ट्रोलॉजिकल में कई बार जब मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये जो हम एस्ट्रोलॉजी में बर्थ टाइम जो हम ऑब्जर्व करते हैं, वो बर्थ टाइम कौन सा होना चाहिए? एक, द डेट एंड टाइम व्हेन बेबी वाज कंसीव्ड और अ बेबी केम आउट फ्रॉम दैट वूम, यानी जिसका जन्म हुआ, ओके, गर्भ से बाहर आया वो समय, या एब्डोमिनल कॉर्ड जिसमें कट हुआ है, ठीक है, वो मानना चाहिए। अब हकीकत में देखने जाए ना, तो ये सवाल के बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, ठीक है, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा, ओके, बिकॉज आई डो नॉट वांट माय आवर ऑडियंस टू गेट कंफ्यूज्ड। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं कि बेबी, किसी भी बच्चे का जन्म का समय जितना इंपॉर्टेंट होता है, उससे कहीं ज्यादा उसका कंसीविंग टाइम इंपॉर्टेंट होता है। ओके। अनफॉर्चुनेटली आजकल की जो दुनिया है, मीन्स जो जिस माहौल में हम रहते हैं, ठीक है, इस माहौल में कंसीविंग टाइम का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया है। We don't even know it. वी डोंट इवन नो इट, राइट? अब कभी कभी जब ये सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जैसी इवेंट्स होती है, तब न्यूज़पेपर में आपने अक्सर पढ़ा होगा कि ड्यूरिंग दिस एक्लिप्स टाइम व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड नॉट, Right. ठीक है। तो व्हाट यू शुड नॉट उसमें लिखा होता है, अक्सर लिखा होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम यू शुड नॉट इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू अ सेक्सुअल एक्टिविटी। उसके पीछे साइंस है, बिकॉज दैट इज नॉट द ऑस्पिशियस टाइम, नॉट इवन वेदर, जो बाहर का जो एनवायरमेंट है ना, वो भी इतना अच्छा नहीं होता है। ऐसा साइंटिफिकली माना जाता है कि ड्यूरिंग एक्लिप्स टाइम, ग्रहण के समय, हवामान में काफी बदलाव होते हैं, नेगेटिव बदलाव चेंजेस होते हैं, और उसमें बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, राइट? सो दैट particular period is not believed to be the right moment for any good things, not only sexual activity but otherwise। ना तो हम सूर्य ग्रहण के दिन या चंद्र ग्रहण के दिन शादी करते हैं, ना नामकरण की विधि करते हैं, ना कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, राइट? उसके पीछे शास्त्र है, उसके पीछे रिलीजन को छोड़ दो, ठीक है। अगेन वो इट इज नॉट अ रिलीजियस एक्टिविटी इवेंट, इट्स अ साइंस इवेंट है वो, ठीक है। तो जो कंसीविंग का जो टाइम होता है, ठीक है, अगर आप उस चीज को भी ऑब्जर्व करो, एंड इफ यू कंसीव अ बेबी ड्यूरिंग द राइट मोमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड द प्रेगनेंसी पेन विल बी लेस, Okay. दैट प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस विल बी अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर दैट लेडी। सर आप मुझे एक बात बताइए, आप शायद फार्मर नहीं हो, फिर भी फार्मिंग के कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे, ठीक है। सर कोई भी खेत में बीज बोने का समय कौन सा होता है? It's, not aware of such in detail, right? हाँ, तो ये लेकिन कॉमन सेंस के हिसाब से मुझे बताइए, कौन सा समय सही होता है बीज बोने का? यूजुअली तो अर्ली मॉर्निंग माना जाता है, ओके। या फिर हम ये कहें कि भाई हर जिस तरह की फसल उस हिसाब से उसका मौसम होता है बीज बोने के लिए, जिससे कि वो सही समय पे पले बढ़े। ओके, चलो तो मैं आपको एक इस पर्टिकुलर इवेंट को हमारे नेचर के साथ का कनेक्ट बताता हूं। किसी भी खेत में बीज बोने से पहले खेत को जोता जाता है। हाँ जी। वो क्यों जोता जाता है सर? और जोतने की जो प्रोसेस होती है वो एक्चुअल क्या होती है? No, for me, being belonging to a non-farmer family, so this will be a difficult one for me. ठीक है, But चलो तो मैं उसका जवाब मैं दे देता हूँ। हाँ जब आप खेत जोतते हो तो क्या करते हो, ठीक है, नीचे की मिट्टी ऊपर आती है। हाँ जब आप जी। ये हाँ करते हो, नीचे की मिट्टी ऊपर आती है, ऊपर की मिट्टी नीचे जाती है। उसमें अगर कोई कचरा बचा है, पुराने फसल का कचरा बचा है, तो वो सब निकल जाता है, निकल जाता ठीक है। उसके अंदर जब आप खेत जोतते हो तो उसमें ऑक्सीजन और वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है।
हाँ जी, राइट। ठीक है, यानी आप करते क्या हो, खेत में बीज बोने से पहले खेत को तैयार किया जाता है, यस और नो? यस, यस। तो उसी तरह से बेबी को कंसीव करने से पहले जो फिजिकल रेडीनेस जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इजंट इट अ सेम थिंग? राइट, राइट। राइट, कि आप बीज बोने से पहले यू गेट रेडी योरसेल्फ, इट्स लाइक कनेक्टिंग द डॉट्स। कनेक्टिंग द डॉट्स, राइट? अब दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हैं कि जब आप सीड को जमीन में कब डालते हो, जब मिट्टी जो है या खेत है जोत के रेडी हो गया है। हाँ जी। ठीक है, अगर आप जो एस्ट्रोनॉमिकल जो पंचांग होता है अगर उसको स्टडी करोगे तो उसमें नक्षत्र भी दिए जाते हैं कि कौन से नक्षत्र में आपको बीज बोना चाहिए, हाँ जी, जिससे कि आपकी फसल अच्छी हो। यस। ठीक है, खेत की बकायदा फार्मर्स पूजा करते हैं, जिस दिन बीज डालते हैं पूजा करते हैं, और वो मुहूर्त के हिसाब से पूजा करते हैं। व्हाट इज मुहूर्त? इट्स ऑस्पिशियस टाइम स्लॉट, पर्टिकुलर टाइम स्लॉट विच इज वेरी ऑस्पिशियस। ठीक है, उस समय वो बीज डाला जाता है, और बीज उस वक्त डाला जाता है कि जब बीज डालने के कुछ दिनों के पश्चात बारिश का आना संभव होता है। राइट? तो अगर एक एक फार्मर जो साल में शायद 2 या 3 क्रॉप लेता है, वो हर क्रॉप लेने से पहले अपने खेत को तैयार करता है, समय के हिसाब से जो सही समय उस वक्त बीज डालता है, तो हम तो जनरेशन क्रिएट करते हैं ना। आर वी ऑब्जर्विंग इट? वी आर नॉट ऑब्जर्विंग, यस, बट वी शुड। राइट? तो जब आप समय को देखकर, ठीक है, योर एस्ट्रोलॉजर कैन गाइड यू कि विच टाइम विल बी द फेवरेबल एज पर योर होरोस्कोप, विच विल बी द राइट टाइम फॉर कंसीविंग बेबी। अगर आपने उस चीज को ऑब्जर्व किया है, सो प्लैनेटरी कंडीशन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम विल हेल्प यू टू कंसीव बेबी इन अ राइट वे। ओके, और वो बेबी भी आपका अच्छी तरह से पल बढ़ सकेगा, उसमें आपकी कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस कम हो सकती है, आपकी जो प्रेगनेंसी पेन जिसको कहते हैं वो भी कम हो सकते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल what you are doing, you are managing the event. I'm giving you the one more example. I'm sorry, I'm taking little more time on this. सर, आपके घर में अगर शादी है, ठीक है, शादी कितने दिन का इवेंट होता है सर? Like 4 to 5 days. राइट? उसकी प्रिपरेशन कितने समय पहले आप शुरू करते हो? That depends, but yes, at least 3 months. At least 3 months, right? उसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन लोग होते हैं जो उस इवेंट में इन्वॉल्व होते हैं, यानी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं? Sir, I would say immediate family members of the bride and the groom. तो पूरा परिवार तो वही हो गया, and then all the others. देखा जाए तो हमारी इंडियन सिस्टम में तो मैरिज पूरा एक मेले की तरह होता है, तो अगर हम सबको मान लें एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, सो यस, इट्स अ ह्यूज नंबर। राइट? तो सर, एक जो 4 या 5 दिन की इवेंट होती है उसके लिए आप कम से कम 3 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू करते हो। कुछ सिचुएशन में शायद 3 महीने से ज्यादा की भी प्रिपरेशन हो सकती है। हाँ, यस। राइट? दूसरी बात कि उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। हाँ जी। ठीक है, दोस्त भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सर, आपने दोस्तों का नाम नहीं दिया, लेकिन दोस्त भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके पड़ोसी भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ जी। ठीक है, और सर 4-5 दिन का जो शादी का इवेंट है वो खत्म होने के बाद क्या होता है? रेगुलर लाइफ हमारी शुरू हो जाती है। राइट? सर, एक बच्चा फैमिली में नया आने वाला है, उसके लिए कितने समय पहले आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए? राइट, यस। कितना प्लानिंग करना चाहिए? सर, आप शादी का प्लानिंग कितना डिटेल में करते हो? पहले तो लिस्ट बनाते हो, गेस्ट का लिस्ट बनाते हो, उस हिसाब से आप कैटरर को ऑर्डर देते हो, आप हॉल बुक करते हो, फूल वाले को बुलाते हो, ठीक है, मंडप वाले को बुलाते हो, फोटोग्राफर को बुलाते हो। ठीक है, आजकल तो शादियां भी इवेंट बेस्ड हो गई है, डेस्टिनेशन मैरिजेस होने लगे हैं। ठीक है, अब आप सोचो उसके पीछे कितनी बड़ी मशीनरी काम करती है। अब उसी चीज को अगर हम देखें, जहां पर हमें अभिमन्यु पैदा करना है, ठीक है,
जो जिंदगी में चक्रव्यूह भेजने की क्षमता हो सकती है, उसकी प्रिपरेशन हम कितनी करते हैं? सर शादी का मुहूर्त देखते हैं ना? बिल्कुल। देखते हैं ना? हाँ? खेत जोतने का भी मुहूर्त देखते हैं, शादी का भी मुहूर्त देखते हैं। ठीक है, घर में कोई अच्छा इवेंट है, ठीक है, जैसे लेट्स से फॉर एन एग्जांपल गणेश स्थापना होती है गणेश जी के दिनों में, या नवरात्रि होती है, सर उसका भी तो समय आप देखते हो ना, कौन सा मुहूर्त अच्छा है जिसमें आपकी पूजा होनी चाहिए, हाँ जी, राइट? हाँ जी। अभी हर वक्त अगर आप एक जिसको कहते हैं समय को लेकर चलते हैं, या समय मीन्स वो जो ग्रह या नक्षत्रों को समझ के या मुहूर्त को समझ के आप काम करते हो, तो बच्चा कंसीव करने के लिए क्यों नहीं करते? Right. So अरे with गेटिंग? this, yes. So with this, I come to this question. What I'm actually wondering when I was you're explaining this, we talked about the health of the mother, right? Then we talked about the kind of ambience environment should be provided to her. But why is Garbh Sanskar important with respect to the career of the child? How does it impact this? Why should we, go about doing it? ओके, तो सबसे पहले सर इसमें आपने जो सवाल जो किया है ना, उसमें दो पार्ट है. फर्स्ट पार्ट इज व्हाई गर्भ संस्कार इज इंपॉर्टेंट, एंड सेकेंड पार्ट इज व्हाई गर्भ संस्कार इज इंपॉर्टेंट फॉर द करियर और एजुकेशन. Right. एम आई राइट? Yes, yes. तो पहले पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाई गर्भ संस्कार आर मोर इंपॉर्टेंट. देयर आर 5 रीजंस, और ये पांचों रीजन एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं. सो द फर्स्ट पार्ट इज, या द फर्स्ट आई वुड से important factor why Garbh Sanskar is important. First is it promotes physical development. Yes. It actually promotes the physical development of two people. One is mother and another is a child who is Child. there in the womb. Right. Right? So Garbh Sanskar, now again, Garbh Sanskar I am decoding once again. It is education related to Garbh और कंसेविंग, राइट? तो आपको अपने आप को एजुकेट क्या करना है? दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल डेवलपमेंट. सो दैट्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकेंड इंपॉर्टेंस इज इट एक्चुअली एनहेंस द इमोशनल वेल बीइंग ऑफ अ लेडी, which impacts the emotional well-being of a child who is there in the womb. ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर. The तीसरा जो है, that is, it improves the cognitive development of a child or a fetus. Because normally हमने देखा है that in a Garbh Sanskar it recommends that you should read, you should listen the good stories, you enjoy music. आजकल तो म्यूजिक थेरापी भी लोग लेते हैं या ले सकते हैं. Okay, so you take all this thing during your pregnancy, which can help to stimulate that cognitive development of fetus in the womb. So that's a third part of it. Fourth part, most important, when child and mother, when they are having the good health, when I say good health, it's a psychological and physical health, तब उनके बीच का जो bonding है वो भी अच्छा होता है. It's actually recommend the various techniques that promotes the strong emotional bond between the mother and the developing fetus, which can enhance the emotional and psychological well-being of both. इसलिए गर्भ संस्कार जरूरी है. वो मदर और बच्चे का दोनों का बॉन्डिंग होना, अच्छा बॉन्डिंग होना जरूरी है. एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट इज इट रिड्यूस द प्रेगनेंसी रिलेटेड डिस्कम्फर्ट. Right? Because during conceiving, lot of people they recommend to practice yoga, meditation, even relaxation techniques and all, okay, which can help you to avoid discomfort like nausea, fatigue, backache and so many other things. तो ये जो चीज है, ठीक है, मीन्स गर्भ संस्कार का इंपॉर्टेंस ये है.
ये 5 चीजों के लिए चाहिए. अब आप सोचिए that if you have taken the right Garbh Sanskar, okay, you will end up producing a healthy baby. Do you agree on this? Yes. Okay. Yes. And when I say healthy baby, it is not only physically healthy, but even mentally healthy also. Yeah. ठीक है. अब मेडिकल साइंस की बात करते हैं सर. मेडिकल साइंस क्या कहता है कि बच्चे का ब्रेन जो है वो कहां पर डेवलप होता है सर? जन्म के बाद नहीं होता है ना, हाँ. राइट? वो तो जन्म के बाद उसका यूज करना शुरू करता है. हाँ जी. But that brain gets rightly developed when the child has been treated well in a form of fetus in the womb. तो मदर की साइकोलॉजिकल फिजिकल कंडीशन अगर हेल्दी है, ठीक है, तो बच्चे की भी होगी. और बच्चे की होगी तो जब बच्चा जन्म लेगा विथ हेल्दी माइंड एंड द बॉडी, ओके, दैट विल इंक्रीज अ लॉट ऑफ probabilities of success, which impacts directly with his education and career. Okay. तो और सर मैं आपको बताता हूँ, I have been doing this education and the career consulting for past so many years. मैंने कई सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं that father is IIT IIM gold medalist, mother is also well educated and probably you can say the engineer kind of lady. A child is struggling in education. Forget about the career. Child is struggling in education. Oh. Right? So, ये सिर्फ मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं. अगर इसके ऊपर भी हमें बात करनी है तो probably it will take hours to discuss on this. Okay? उतने सारे एग्जांपल, कई सारे एग्जांपल आपके आपके नेटवर्क में, आपके सोसाइटी में भी आपने देखे होंगे. राइट? तो क्वेश्चन ये है कि if you really want to ensure that your child should have the bright career and with exemplary good in education and all, okay, prepare that child when that child is in the womb of your mother. Okay. Development womb के अंदर होता है, बाहर अलग चीज होती है. Prepare your child, prepare your fetus, treat your fetus in a way which help him or her to conquer the life in the right way. Exactly, because as the literacy level or awareness in our country is increasing, even after independence, I would say government gave special attention to the education of females. So I would say yes, the things are improving. Even females are more aware. The male counterparts, I would say, they are more aware now. But that awareness is up to the health of the Exactly. I was just about to tell huh, you. huh. So they don't at that level, the career or the health of the child does come into play, but not the career perspective, right? So what would you like to tell people that what should they exactly be doing or thinking especially on it? Okay. पहली बात तो ये है कि when we are talking about next generation to have the bright career or the good quality life, okay, उससे पहले आपको existing situation को समझने की जरूरत है. ठीक है? Just go back 30 years or 40 years from now. ठीक है? उस वक्त ग्लोबलाइजेशन नहीं था, कंपटीशन इतनी नहीं थी, लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी नहीं थी. अगर हम हमारे फैमिली सेटअप को अगर हम देखते हैं, सो वी मूव्ड फ्रॉम जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर टू न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर, एंड फ्रॉम न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर वी मूव टू सिंगल चाइल्ड स्ट्रक्चर, मीन्स न्यूक्लियर फैमिली विथ सिंगल चाइल्ड. And now we have already started a new journey, is single parenting also. Right. ठीक है? तो ये हुआ आपका सोशल फ्रेमवर्क. ठीक है? On the other side, you can understand and
I'm sure you must have experienced a lot of health challenges which are surfacing out. आज से 30 साल पहले कैंसर के कितने किस्से आप सुनते थे और आज कितने सुनते हो. Okay, health challenges are increasing, and when I say health challenges, those are physical health problems and the psychological health problem also, which are impacting our life. Right? ये दूसरी बात है. The third perspective which you have to understand is the complexity in the profession. Cutthroat competition is there. Everyone talks about the international career. Everyone talks about the international education. Okay. So my point is, when we are moving from lean, life structure to a complex life structure, okay, we have to get prepared. लेकिन हम प्रिपेयर कब हो सकते हैं? जब हमारे में क्षमता है तो. अब हमारी क्षमता जो बननी थी बन चुकी, बट ये कॉम्प्लेक्सिटी दिन ब दिन बढ़ने वाली है. ओके, कम नहीं होने वाली है. Okay, I was listening to one of the speaker during my Rotary meeting just 2 days back. Earlier, we had people who used to challenge people. From that level, we moved to a different level where situations started challenging people. And today, now we have a situation where technology has started challenging the people. Right, right. ओके सर, हम बहुत खुश होते हैं कि इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जन्म दिया, पर हम ये नहीं, ये भस्मासुर जैसी बात है. अगर उस टेक्नोलॉजी को अगर आप सही तरह से यूज नहीं कर पाए, राइट, तो वो भस्मासुर बनेगा जो शिव जी को ही जलाने निकला था. राइट. सो point is, I am not criticizing technology, but I am just wanted people to understand and experience that impact of technology in our life, right? तो ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए अगर हम अपने आप को प्रिपेयर करने में स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, तो आने वाली जनरेशन कितना स्ट्रगल महसूस करेगी, क्योंकि ये दिन ब दिन कॉम्प्लेक्सिटी चैलेंजेस बढ़ने वाली है. ओके, सो व्हेन यू आर कंसीविंग बेबी, are you actually considering all these factors before you conceive a baby? Yes. Right? तो गर्भ संस्कार के 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज प्री कंसीविंग, दूसरा जो होता है पोस्ट कंसीविंग. और दोनों में आपकी बायोलॉजिकल फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है. एंड यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू कंसीव बेबी ड्यूरिंग द राइट प्लेनेटरी कंडीशन. Okay, which will help you. Even if you don't believe in God, even if you don't believe in planet, doesn't matter. लेकिन जो चीज, मैं गर्म चीजों में बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन गर्म लोहे को मैं हाथ लगा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है. मैं बिलीव नहीं करूंगा, दैट डज नॉट मीन कि लोहे का सलिया गर्म नहीं है. राइट, राइट, राइट. So even if you don't believe in God, even if you don't believe in planets and all, but they impact on you. So at least you should be selfish enough to understand कि आपको आपके फायदे के लिए उस शास्त्र का, उस साइंस का उपयोग करके आगे बढ़ना है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. 2-3 चीजें और मैं एडिशनली इसमें बताता हूं. सर, अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैं एजुकेशन काउंसलिंग या करियर काउंसलिंग में लोगों को अक्सर कहता हूं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एजुकेशन हो या करियर हो, कोचिंग या मेंटरिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. एक सिर्फ स्पोर्ट्स को छोड़ दो, जहां पर स्पोर्ट्स, अगर आपको स्पोर्ट्स में करियर करना है तो यू नीड टू हैव द कोच, ओके, हु विल गाइड यू. लेकिन सर, अगर मैं कहूं तो शायद आप हंस दोगे या लोग भी हंस देंगे कि क्या हम प्रेगनेंसी के लिए या बेबी कंसीव करने के लिए कोचिंग लेते हैं क्या? नहीं लेते. बट क्यों नहीं? कौन रोकेगा? अगर आपको लेना है कोचिंग तो कौन रोकेगा आपको? और क्यों नहीं लेना चाहिए? इफ यू आर टेकिंग द मेडिकल एडवाइस, ओके, व्हाई कांट यू टेक द साइकोलॉजिकल एडवाइस और फिजिकल फिटनेस एडवाइस? So we actually, maybe our social framework or social setup is such that we don't give it due importance. And as far as any
a problem is considered a problem if it is medical, right? So for that, the medical, the gyno or the doctor is available, and whatever problems a female faces, she feels that okay, she's the right person. And for all other problems, if we say we have the elders at home, so with their limited knowledge or whatever experience they have, they guide us with that. But yes, that is not their forte, or it's not their specialized skill. So राइट सर, जैसे आपने बताया, सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, इसकी जागरूकता फैलाना जरूरी है। yes, सर मैं ये कहता हूं कि इफ यू आर एंटरिंग इनटू द डार्क टनल वेयर देयर इज नो लाइट एग्जिस्ट, कम से कम उसमें अंदर जाने से पहले यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू कैरी एटलीस्ट अ टॉर्च विथ यू, यस और नो? yes, 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 Right? So life is like a dark tunnel. You really do not know what is there for you in the future. When I'm saying, I'm talking in the context of the complexity we just I spoke about it. yes. Right? So why can't you get ready for that? अगर एक अच्छे करियर के लिए आप एजुकेशन लेते हो, तो एक अच्छे लाइफ के लिए प्रिपेयर क्यों नहीं होते? उसके लिए तो एजुकेशन जरूरी है ना? Right. Yes. राइट? तो कहने का मतलब ये है कि सर, लोग अक्सर 2-3 गलतियां कर देते हैं, ठीक है, नॉट ऑल बट ज्यादातर लोग करते हैं। एक, गर्भ संस्कार को वो एक रिलीजन के साथ या रिलीजियस मैटर समझ लेते हैं, विच इज नॉट। और दूसरा, थोड़ी देर पहले मैंने जैसे बताया एस्ट्रोलॉजी को भी वो रिलीजन के साथ जोड़ते हैं। इट इज नॉट, इट इज एक्चुअली अ स्पिरिचुअल मैटर, और इट्स अ स्पिरिचुअल science which enable you to prepare something for the future. Yeah, I fully agree on that, because for females, mothers, to be mothers, they are like the, you know, हमारी सोसाइटी में भी, हमारे चाहे रिलीजियस कह लीजिए, चाहे ह्यूमनली कह लीजिए, लेकिन मदर को, माँ को एक बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, राइट? सो एवरी, भगवान का दर्जा दिया जाए भगवान, सर, बिल्कुल भगवान, भगवान। हाँ, भगवान का दर्जा दिया गया है। तो उस जर्नी में उसको सपोर्ट मिलना जरूरी भी है और सही भी है, राइट? सो विद दिस, आई वुड like to say thank you for all the nuggets. And if you still feel some finer points that people need to remember, and maybe they get to understand why they should go for Garbh Sanskar, please, what will be your like last suggestion to such people? माय सजेशन इज, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, व्हाई टू स्ट्रगल व्हेन यू कैन प्लान, राइट? Yes. पहली बात। दूसरी बात, कंसीविंग अ बेबी is a very very important event of your life, because you are not just producing a baby, or you will not be just producing a baby, but you are creating the new generation. So which type of generation would you like to produce? ये दूसरी बात है। Third thing, when you are ready for extending your family, you have to be selfish, first of all, to learn many things, right? That preparedness is very very important for you, right? So my suggestion, on the closing note, I would like to suggest aspiring parents कि किसी भी चीज को हल्के में मत लो। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, जिससे कि आप इस दुनिया को, इस देश को, इस समाज को एक अच्छी जनरेशन दे सकते हो। हम मानते हैं, और हकीकत भी है, कि इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे, राइट? Yes. बट उसके साथ साथ हमारे पास इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया शुड नॉट रिमेन ओनली द यंगेस्ट कंट्री, बट इंडिया शुड ऑल्सो बिकम द इंटेलिजेंट यंग जनरेशन कंट्री। ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है। Right.
right? So, on So that note, a big thank you for the interesting discussion. और गर्भ संस्कार के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता था, सही बताएं तो, सिवाय स्टोरीज के. एंड दैट वाज अ वेरी वेरी useful and learning session even for me, and I believe for the audience as well. So thank you, sir. Thank you very much. thank you very much, Kapilji, and it's really a great interaction today I had with you on and with the audience. Okay, uh, on such subject which is very close to my heart, बिकॉज मैं ये कह समझता हूँ कि अगर हमें हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य देखना है तो उसकी शुरुआत गर्भ से होती है. Yes. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. Thank you. Uh, and for all the viewers, if you found this discussion useful, you can definitely subscribe to this podcast on Apple, Spotify, Google Podcasts to get notified. All our podcasts are short and crisp. And of course, you can also subscribe to our YouTube channel, Brainiacs EduTech. And I would request all of you to please write, comment, and give feedback. This also helps us in our learnings, and we get to prepare content that is most required by our viewers and listeners. And if you have any queries, you can also DM me on my Instagram channel, Brainiacs EduTech. You can also join my community, Career Advisor Hub, on Facebook and be part of discussion and Q&A. Until the next episode, cheers, God bless, keep inspiring. Bye. So, thank you, sir. थैंक यू वेरी मच.